Hi everyone, how you all are? I hope you all are well and doing your study very good. So this is the part 2 of animal and insects chapter. This is the chapter number 4, and in this video we will complete this chapter, and after this video we will complete the whole exercise which is given in the book. Okay, now let's start. The name of the chapter is Animal and Insects. In this chapter I want to tell you that there is a whole world of insects too. Okay, lot of different type of insects are there in the whole world. Some are flyers, some are jumpers, some can walk, some can live together, some can live in the colony. Okay, so they have different habits. Like human beings have different habits. In the same way, insects have different habits and they behave differently. Okay, their eating habits, lot of things are different, and in this video we will discuss and complete all type of insects. Okay, so in this picture also you can see that different type of insects are there. Some are bees, some are butterflies, some are moth. Okay, so these all are example of insects. Okay, and these all are the categories of insects too. Okay, now I'm going to tell you the types of insects in this video. Firstly, we will discuss the social insects. As we all are the social animal, human is a social animal, so we people are living in the colonies. You know that there are a lot of people who live nearby you, lot of people live behind your house, lot of people live around your house. Okay, so this thing is very common and clear that we people live in the colonies. In the same way, social insects who are social, they also live in the colonies. Here are few examples like bees, wasps, ants. They all are live in the colonies and they are called social insects. Ants live in the nest. They have a queen. Okay, so ants live together. They live in the group and they live in the nest, and there is a main ant is there which is called queen ant. Okay, she is the only one who lays eggs. Okay, so among the thousands of ants, only one ant is able to lay eggs, which is queen ant. Okay, that is a little bit larger or bigger than the other ants. Okay, ants work very hard all the summer. They work very hard and they store food for the winter season and rainy season. Okay, दैट मीन्स अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल सेविंग की हैबिट हम लोगों में भी होती है, हम सेविंग करते हैं, आप लोग भी अपना पिगी बैंक में कुछ सेव करते हैं, गुल्लक में कुछ सेव करते हैं, तो वो आप तब के लिए सेव करते हैं जब कभी भी आपको उसकी नीड हो. इन द सेम वे एंड वर्क टुगेदर एंड दे वर्क वेरी हार्ड एंड स्टोर द फूड फॉर रेनी एंड winter seasons. Okay, and whenever they find food, they collect that food in the nest. Okay, while going back they leave a trail of sand by pressing their body to the ground. The other ants find the food by following this scent. Okay, this is the way of their food gathering. So here is, you can see the one beehive. This is also example of social animal. Bees are also live together and they produce honey with the help of their saliva and juice which they gather from the flowers. Okay, so they live together and they are also called social animal. Okay, now we are going one step forward and we discuss about the flyers and jumpers. This is very easy to recognize the insect by looking them. Okay, you can recognize who is social insect, as you can see that lot of for example lot of insects are going in the same direction and they are living in the same place like nest or in the hive. So you can recognize and you can tell them social insects. Okay, in the same way few insects are there who can fly. Okay, so butterflies, moths, dragonflies. Okay, so they are the example of flyers. Why they are called flyers? Because they can fly, and dragonfly can catch and eat other insects in the midday by stretching their legs. Okay, so dragonfly
In the last video I tell you carnivore. So this is the example of carnivore because dragonfly can catch other insects and they eat them too. Okay, moths are just looking like a butterfly. Okay, if I talk about the body shape of butterfly and moths, they are just similar, but butterfly you can see in the daytime and moth you can see in the night. Okay, we see butterfly in the daytime and we see moth at the night, while moth have thicker bodies and butterflies are thinner. So this is also a difference between them. And now we are going to the grasshopper. Grasshopper and crickets are jumpers. अब आप कैसे पहचानेंगे फ्लायर्स को? फ्लायर्स वो होते हैं जो, अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि बीज जो है वो फ्लायर क्यों नहीं है? बीज को हमने फ्लायर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है? वाई वी आर नॉट टेकिंग देम? बिकॉज दे आर लिविंग इन द कॉलोनी. अगर आप देखेंगे बटरफ्लाइज को तो दे आर नॉट लिविंग इन द कॉलोनी, दे आर नॉट लिविंग टुगेदर. आप बहुत बार ही और ऑलमोस्ट ऑलवेज यू कैन सी अ सिंगल बटरफ्लाई एट अ टाइम, बट if you see the bees, honey bees, they live together and you always see them in a group. All right, so this is the basic difference between them, then why they are called flyer and why they are called social insects. Okay, now jumpers, I'm going to the jumpers. Why they are called jumpers? Because they jump very high, like grasshopper, crickets, chameleon, grasshoppers, crickets, they are called jumpers. Jumpers means वो jump करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कूद कर जाते हैं. वो वॉक नहीं करते हैं, ना ही वो फ्लाई करते हैं. दे जंप ट्रेमेंडसली. ओके, बोथ मेक अ किरपिंग साउंड, और उनकी जो साउंड होती है वो बहुत क्रीपी होती है. मतलब यू डोंट लाइक, इफ यू लिसन देयर साउंड यू डोंट फील गुड. ओके, and for sometimes they bother you a lot. Okay, so you can recognize if they jump, so you will call them jumpers. If they fly but alone, you will call them flyer. Okay, for example, they fly but if they are in the collected form, they are in the colonies, so you can call them social animals, social insects. Okay, now there is a picture of dragonfly, you can see her. The next one is, I would like to discuss reptiles. What the reptiles are? Reptiles are quite different from the flyers and jumpers and social insects. Okay, lizard and chameleon are the example of reptiles. You can see lot of time lizard in your house on the which is walking on the wall. Okay, so though they crawl, actually the process they walk, that is called crawling. Okay, crawling means होता है घिसटना या घिसट कर एक जगह से दूसरी जगह पे चलना. They are generally they are not insects, they are reptiles. We categorize them differently because their characteristics are different from the insects too. Okay, in fact they eat insects. Okay, if you can see that the reptiles can eat and their food is insects are generally. Lizards can clean our home by eating insects like moth and flies. Lot of time you can see that lizard जो है she is crawling on the wall और भाग कर वो आती है, वो एक कोई भी वहाँ पर जो भी इंसेक्ट होता है वो उसे खा लेती है. ओके, सो उनका जो फूड है वो क्या है? इंसेक्ट्स को खाना. और वो ये रेप्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एटमॉस्फेयर, फॉर आवर थिंग्स अराउंड अस, बिकॉज दे मेंटेन द बैलेंस. बैलेंस को मेंटेन करते हैं ये अननेसेसरी जो बहुत ज़्यादा छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो बोदर कर सकते हैं आपको, जो हो सकता है कि क्रॉप्स को ख़राब कर दें, माइट बी दे आर हार्मफुल फॉर फार्मर्स टू. तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं दे ईट देम एंड दे मेक ईजी फॉर अस टू लिव. ओके, so however we should keep food safe from lizard as their body are very poisonous. यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें अपना जो फूड है वो लिजर्ड से थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो पॉइजनस होती है, पॉइजन होता है इनकी बॉडी में, और अगर वो फूड में जाता है तो हमारे अंदर वो पॉइजन आ सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये कंडीशन हमारे लिए हो सकती है. Here I pasted 2 pictures.
one is of chameleon and one is of lizard. Chameleon and lizard are little bit similar in the body shape, but chameleon can change its body color continuously. आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो पिक्चर लगाई है इसमें ये काफ़ी सारे कलर्स का है, तो कैमलियन अपने बॉडी कलर चेंज कर सकता है, बट दिस इज नॉट हैपन विद द लिजर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ लिजर्ड इज ब्लैक, इट कैन बी ब्लैक ओनली. Okay, it could be only black, and if lizard is green, the beige of the beige color, it will be beige only. Color will not change. So keep this thing in the mind that there is a huge difference between them. The chameleon can change its color of its body color, and lizard can't. Okay. So now we are going to the next one, that are common insects. Common insects are the insects which we can see everywhere, in the market, in the food plaza, in the house, on the drain system, on the roadside, everywhere you can see them. So they are called common insects, like flies, मक्खियाँ होती हैं, जो cockroaches होते हैं, mosquitoes. They are very very harmful for human health. ओके, हाउस फ्लाइज, हाउ हाउस फ्लाइज इज हार्मफुल. हाँ, जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, वाई शी इज़ हार्मफुल? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये बाहर गई और बाहर जाकर इसने रोड साइड पर कहीं भी कोई ड्रेन सिस्टम है, कोई नाली है, कोई कचरा है, गार्बेज एरिया है, वहाँ पर बैठ गई. ओके, देन शी एंटर इनटू द हाउस, और जो ईटेबल्स होते हैं, जो ईटेबल थिंग्स होती हैं, अगर बाय द वे वो खुली हुई रखी हुई है तो ये उस पर भी बैठ जाती है, तो इसके लेग्स पर जो भी डर्ट और जम्स होते हैं वो फूड पर भी लग जाते हैं. सो यू कैन इमेजिन कि आप इतनी क्लीनलीनेस से खाना पका रहे हैं, बट इट स्पॉइल एवरीथिंग, एंड इट स्पॉइल ऑल द क्लीनलीनेस ऑफ योर फूड, एंड इट मेक यू इट completely completely harm your digestive system also. If we look at the fly through the magnifying glass, we can see, अगर आप magnifying glass से इसको देखेंगे तो आप क्लियरली ये चीज़ देख पाएंगे कि इसके जो लेग्स होते हैं उसमें बहुत सारी गार्बेज और डंग लगा हुआ होता है. ओके, सो इफ द फ्लाई सिट्स ऑन द फूड, इट कुड लीव ऑल इज डर्ट बिहाइंड. सो ऐसा वाला जो फूड होता है, अगर आप उसे खाते हैं, वाई द एल्डर्स प्रिवेंट यू फ्रॉम द रोड साइड फूड? दिस रीजन इज सेम. Reason is same, because lot of flies are there, and they go here and there, and then they sit on the food items also, and it make you sick. Okay, same thing happen with the cockroaches. Cockroaches move in and out of drains and also carry a lot of dirt. Cockroaches भी ड्रेन में जाते हैं और फिर लौट कर आकर ये किचन में आ जाते हैं, और ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर ये जम्स को स्प्रेड करते हैं. So we should always keep our food covered, because these small insects are exist everywhere, and it can make us feel sick, and it can make us sick. So always protect yourself from them, and always eat neat and clean food, and always cover that food with the plate and all. Okay, the next one is mosquito. Mosquito breed is in the standing water in the swamp. Mosquito bite can cause many harmful diseases like malaria, dengue, chikungunya. Okay, so mosquito also breed in the standing water. If for example यहाँ पर एक छोटा सा होल है रोड साइड पर, और उसमें थोड़ा सा पानी, बारिश आई है और उसका थोड़ा सा पानी यहाँ पर जमा हो गया है, तो यहाँ पर जो फीमेल मस्कीटो होती है, एनोफ्लीज मस्कीटो जिसको बोला जाता है, इट लेज हर एग देयर, और वहाँ पर ब्रीडिंग होती है, और वहाँ से बहुत सारे मस्कीटोज जनरेट होते हैं. सो ब्रीडिंग के थ्रू, और उसके बाद ये जो कूलर का वाटर होता है वहाँ भी इसकी ब्रीडिंग हो सकती है, गार्बेज में इसकी ब्रीडिंग हो सकती है, फ्लावर पॉट में अगर आपने फ्रेश फ्लावर लगा रखे हैं पानी के अंदर, तो इट कैन ऑल्सो, इट इज़ प्रोबेबल दैट इट कैन ले एग also there. So we must not let water get collected in our surrounding for too long. तो आपको कूलर का पानी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं. if you are not using your cooler, so empty it and clean it and wipe it with the cloth and make it clean. Okay, so this is very very important.
to keep your eye on this kind of insects because they are harmful and they can make you sick anytime. Okay. सो ये देखिए मैंने यहाँ पिक्चर पेस्ट करी है. पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो गार्बेज एरिया है वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज हो सकते हैं और वहाँ से वो डर्ट लेकर आते हैं अपने लेग्स पर और वही लेग्स आप वो आपकी खाने की चीज़ों पर रख कर बैठते हैं जिससे वहाँ पर जम्स आ जाते हैं. ओके. सो आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा. नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड. In the part 3 we will complete whole exercise which is given in the chapter, so don't worry and don't bother about it. I will complete all the exercises on the board also, so don't worry. And this is my channel. If you like my video, please subscribe this channel. Thank you.